Now we'll see the drying chapter. What do you mean by drying? Drying किसको बोलते हैं? So drying is nothing but the removal of water, removal of moisture from your material. आपके पास में जो भी मटेरियल है उसमें का मॉइस्चर रिमूव करना है, ठीक है? कितना लेस अमाउंट में. अगर आपके पास में कोई मटेरियल है इसमें 1%, 2% या 3% या 4% या 10% तक मॉइस्चर है. So removal of moisture by application of heat, that is known as a drying. Removal of moisture by application of heat known as a drying. So removal of moisture, or you can say solvent. Okay? Removal of solvent is the better term, क्योंकि moisture क्या होता है? Drying, normally drying is the term applicable for moisture only, but ऐसा नहीं कि हर टाइम पे वाटर ही रहेगा उसमें, कभी कभी सॉल्वेंट भी रहता है. So removal of solvent from the material by application of heat. Okay, that is nothing but the drying. Now in case of drying you are going to get solid. After drying you are going to get solid. आपको इंटरेस्ट किस में है? सॉलिड में. ठीक है, आपके पाउडर है आपके पास में, कोई भी मान लीजिए ड्रग का पाउडर है आपके पास में, एपीआई, या फिर आपके पास में कोई भी एक्सिपेंट है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है. सो यू हैव टू ड्राई इट. ओके, so you are interested in the solid, not in the evaporated water. You are interested in the solid. So what is drying? Removal of relatively less amount of solvent or moisture from the material by application of heat. Removal of less amount of water or less amount of moisture or less amount of solvent from the material by application of heat. And you are interested in the solid product as a drying. But there are two operations related to this drying. So first operation is nothing but the drying, and second operation is nothing but the evaporation. Second operation क्या है? Evaporation. So drying and evaporation में difference क्या है? What is the difference between drying and evaporation? So in case of drying, you are interested in the solid product. आपका solid interest है. So you just want to remove a small amount of solvent or water from the material, and you are interested in the solid product. Now in case of evaporation, what happens? You have to remove large amount of solvent or moisture, and you are whatever product you are going to get, that is a concentrated slurry. इसमें क्या आएगा? Slurry आएगा. So evaporation, okay, the product obtained in the evaporation is a concentrated slurry. The product obtained in the drying is nothing but the solid. Okay? So drying is nothing but the removal of water or removal of moisture or removal of solvent, relatively less amount of solvent or water or moisture from the material by application of heat, that is known as drying. And evaporation is nothing but the removal of large quantity of solvent, moisture or water, and you are going to get slurry in case of evaporation. Drying में आपको solid मिलेगा. Now why drying is important again? So I have told you. So again, presence of moisture in the, okay, presence of moisture in the compound may alter the physicochemical properties of drug. It may degrade the drug. It may cause hydrolysis, oxidation. It is prone to the microbial growth. So there are a lot of advantages of drying. So drying is done for first preparation of bulk drugs. So after the crystallization, आपने क्या किया? रिएक्शन किया, रिएक्शन में आपका सिंथेसाइज किया, जो भी बना है रिक्रिस्टलाइज किया, तो आप उसको ट्राई करते हो ना, बिकॉज अगर वो वैसा थोड़ी रखें. Preparation of bulk drug, for example, dried aluminum hydroxide, spray dried lactose, etc. etc. Preparation of bulk drug. Drying is also done for prevention of drug from deterioration. So drying prevents the drug from chemical decomposition, microbial growth, and hydrolysis, because presence of moisture, presence of water in the drug or another powder, drug or another excipient. So presence of water causes the chemical decomposition, causes the hydrolysis. It is more prone to microbial growth. It is more prone to microbial growth. So decomposition will be there. So basically, drying is done for preparation of your bulk drugs. It is also done for preparation of prevention of deterioration. Again, drying is done for to improve the characteristic of your, to improve the flow properties of material. अगर आपके पाउडर में मॉइस्चर है वो जल्दी फ्लो नहीं होगा, वो कोहेसिव रहेगा. So to increase the flow, you have to dry that. Okay, for example, granules. So drying of granules before the compression into tablet. आप जब ग्रैनुलेशन करते हो
टैबलेट बनाने के लिए जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं उसको प्रॉपर्ली ड्राई करना चाहिए, उसका एक लिमिट भी होता है. सो ग्रैन्यूल शुड कंटेन नॉट मोर देन 1% ऑफ मॉइस्चर, 1% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. सो टू इम्प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक, टू प्रिपेयर द बल्क, टू प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम डिटोरेशन, राइट, दैट इज ड्राइंग. नाउ देयर आर सर्टेन थ्योरी बिहाइंड दिस ड्राइंग. सो फर्स्ट, ठीक है, आपका मटेरियल जो है उसमें दो तरीके का वाटर होता है. सो इन योर मटेरियल वाटर आर ऑफ टू टाइप्स. तो आपके मटेरियल में दो टाइप का वाटर हो सकता है. पहला कौन सा हो सकता है? फर्स्ट इज बाउंड वाटर. वाटर और मॉइस्चर और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द drug, it might be of two types, bound and unbound. Okay, so what is bound water? Minimum water which is held or minimum moisture which is held by material. तो मटेरियल के अंदर कम से कम मॉइस्चर होता है, मिनिमम मॉइस्चर हेल्ड बाय मटेरियल, that exert equilibrium vapor pressure which is less than that of the pure water at a, उसको बोलते हैं bound water. What is bound water? Minimum moisture or minimum water held by compound which exerts a equilibrium vapor pressure which is less than that of the pure water at the same temperature. ये आपको याद रखना. Bound water is nothing but the bound मतलब क्या है? Water held by material. Minimum amount of water or moisture which is held by, which is there in a material that exerts a equilibrium vapor pressure which is less than of that of the pure water. प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जो है उससे कम वेपर प्रेशर है उसका, किसका? जो मटेरियल में मॉइस्चर है. तो ऐसा मॉइस्चर को क्या बोलेंगे? बाउंड वाटर. ओके, सो बाउंड वाटर इज नथिंग बट दैट वाटर व्हिच इज मिनिमम वाटर और मॉइस्चर हेल्ड बाय a compound which exerts a equilibrium vapor pressure which is less than that of the water at a particular temperature, known as a bound water. Now second होता है unbound water. So what do you mean by unbound water? The amount of water or moisture held by material that exert a equilibrium vapor pressure, यहाँ पे देखो, equal to that of pure water, equal to that of pure water. पहले में क्या था? Less than that of the pure water. Bound में क्या है? Moisture which is held by material which exert equilibrium vapor pressure which is less than the pure water at a temperature, known as a bound water. Now unbound water किसको बोलेंगे? Amount of water or moisture held by material which exert equilibrium vapor pressure which is equal to the pure water, which is equal to the pure water at the same temperature. Now that's why unbound water is easy to evaporate. Unbound water जो है वो easily remove किया जा सकता. Bound water वो जल्दी remove नहीं होता. याद रखना definition. Bound water means minimum amount of moisture held by a compound which exerts a equilibrium vapor pressure which is less than that of the pure water at the same temperature. Unbound water means what? Again, amount of water held by material or amount of moisture held by material which exert a minimum, which exert a equilibrium vapor pressure is which is equal to the that of pure water at the same temperature, known as unbound water. Equilibrium moisture content. क्या होता है equilibrium moisture content? So it is the amount of water present in the solid which exert vapor pressure which is equal to the vapor pressure of atmosphere. जो एनवायरनमेंट का वेपर प्रेशर है और मटेरियल में जो वाटर है, मटेरियल में जो मॉइस्चर है, सो अगर दोनों भी का वेपर प्रेशर सेम है तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. सो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट और ईएमसी, इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड व्हिच एक्सर्ट्स ए वेपर प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, नोन एज इक्विलिब्रियम. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. नाउ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इज determined by the determination of vapor concentration and carrying capacity of equilibrium moisture content is determined by using desiccators. तो desiccators होते हैं, आपके लैब में भी देखा होगा हमने desiccators. Equilibrium moisture content is measured by desiccators. जो desiccators होते हैं उससे ही equilibrium moisture content measure करते हैं. So in a series of ऐसा एक सीरीज बनाते हैं, एक 8 या 10 desiccator रखते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी क्या है, कितना है वो मालूम होता है. सो एट अ कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी कंडीशन ए कंपाउंड व्हिच इज प्लेस्ड इन अ डेसिकेटर दैट टाइम दैट देयर इज नो मोर इंक्रीज इन द वेट ऑफ दैट कंपाउंड. मतलब क्या कि डेसिकेटर में वो कंपाउंड को रखना है बाहर अलग अलग डेसिकेटर में ताकि उसमें का मॉइस्चर सब निकल जाए, उसमें मॉइस्चर ना रहे. सो इफ देयर इज अ कांस्टेंट वेट यू आर गेटिंग ऑफ दैट मटेरियल एट दैट टाइम देयर इज अ equilibrium moisture content. So it is the amount of water present in the solid which exert
vapor pressure which is equal to the vapor pressure of atmosphere, equilibrium moisture content, that is determined by using designator. Next is the determination of vapor concentration and carrying capacity of gas is termed as a psychometry. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. The determination of vapor concentration and carrying capacity of gas is termed as a psychometry. Psychometric chart gives the relationship of temperature and humidity. ऐसा ही क्वेश्चन है. So following type of charts will give a relationship between temperature and humidity. So psychometric chart. So determination of vapor concentration मतलब क्या कि एयर में कितना वेपर है, वाटर वेपर, एंड उसका कैरिंग कैपेसिटी कितना है, is termed as a psychometry. And psychometric charts, they are nothing but they will give you a relationship between temperature and humidity. मतलब क्या, जो स्टीम है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका ह्यूमिडिटी कितना है, उसका मॉइस्चर कितना है. ठीक है, उसके बेसिस पे बहुत सारे टर्म्स भी आ रहे हैं. आपको अभी यहाँ पे इतना याद रखना है, साइकोमेट्रिक चार्ट्स विल गिव यू रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड व्हाट इज मीन बाय ड्यू पॉइंट. देखो आपका जो जैसे होता है, अभी समर चल रहा है तो क्या होगा, जो समुंदर है, समुंदर का जो पानी है वो बन जाएगा वेपर्स बिकॉज ऑफ द सनलाइट. तो वो वेपर्स कहाँ पे है, एयर में है. वो वेपर्स इतना जब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, इतना पूरा समर में क्या होता है, वेपर्स हो जाता है, वो वाटर का वेपराइजेशन होता है, तो वो एयर में जाता है. और जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, सो दैट वाटर वेपर्स विल बिकम अ क्लाउड. वहां से क्या होगा, रेनिंग होगा. द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी that is given by psychometry or psychometric charts. Now, first definition is a dew point. What do you mean by dew point? आप IPL देखते होंगे तो उसमें एक टर्म आता है, सेकंड इनिंग में क्या होता है, सेकंड इनिंग में ड्यू गिरता है, ड्यू. व्हाट इज ड्यू पॉइंट? इट इज 60 Fahrenheit per water. Now, what is dew point? Temperature at which given mixture of water and vapor must be cooled to become a saturated. So what is dew point? It is the temperature to which a given mixture of water and air, हवा and vapors, water vapors, इनका मिक्सचर वो तब तक कूल करना है आपको जब तक वो पूरा उसमें सैचुरेट नहीं हो जाता वाटर वेपर से. एयर का सैचुरेशन होने तक आपको कूल करना है. वाटर एंड एयर का मिक्सचर सैचुरेशन होने तक आपको कूल करना है. So temperature to which mixture of water, vapors and air must be cooled to become a saturated. That is nothing but at this point air has a highest capacity. Air has a maximum capacity or maximum amount of moisture in the air. So maximum amount of moisture in the air, temperature at which air can hold maximum amount of moisture without condensation taking place. That is known as the dew point. ठीक है, बाद में ड्यू आता है. ड्यू मतलब क्या, पानी स्लीपिंग हो जाता है, वो फील्ड क्या होती है, फास्ट हो जाती है उस तरह से. सो ड्यू पॉइंट ऑफ वाटर इज 60 Fahrenheit and it is temperature at which given mixture of water and water vapor, given mixture of air and water vapors must be cooled to become a saturated. That is nothing but the air can hold maximum amount of moisture without condensation taking place. That is known as the dew point. Now another definition we will see. The definition is nothing but the weight bulb temperature. Weight bulb temperature. So what is that? It is a equilibrium temperature reached by evaporating surface when the rate of heat transfer to a surface by convection is equal to the rate of heat loss by evaporation. तो weight bulb temperature मतलब क्या है? Equilibrium temperature reached by evaporating surface. मतलब आपके पास एक evaporator है, आप वाटर बाथ में वाटर का इवेपोरेट कर रहे हो. ठीक है, आप जो टेम्परेचर दे रहे हो, जितना टेम्परेचर इनपुट कर रहे हो उतना हीट ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल को. मटेरियल क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है. इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रीच्ड बाय इवेपोरेटिंग सरफेस व्हेन अ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू अ सरफेस बाय कन्वेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ हीट लॉस बाय इवेपोरेशन. That is a weight bulb temperature. Question is super hard. Dew point, weight bulb temperature, equilibrium moisture content, important points. Now, actual temperature measured by ordinary manometer is nothing but the dry bulb temperature.
टेम्परेचर यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर. दैट इज actual temperature measured by ordinary manometer is a bulb, dry bulb temperature. Now drying involves the heat transfer as well as mass transfer. Drying जो mechanism है unit operations के drying, so इसमें दो heat transfer as well as mass transfer. So this drying, your drying method or drying unit operation has a two phenomena. Which are these two? So there is a simultaneous heat transfer and mass transfer. साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफर एज वेल एज मास ट्रांसफर. तो जब आप ड्राइंग करते हो तो हीट अप्लाई करते हो. हीट अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा. आप हीट का आप अप्लाई करते हो. जो जो भी आपने लिया है किट, जैसे मान लीजिए आपने वाटर बाथ ले लिया ड्राई करने के लिए, उसमें आपने बीकर में आपका जो भी प्रोडक्ट है वो डाल दिया, नीचे से बर्नर चल गया. So heat is directly applied to that evaporating surface. So drying means what? Heat transfer as well as mass transfer. Mass transfer means what? So whatever moisture is present in your compound, that will be converted to vapor. So वहाँ पे हो गया है mass transfer. So heat transfer and mass transfer, these are the simultaneous phenomenon in the drying. Okay, drying. Now first, equilibrium relationship. Equilibrium relationship क्या होता है? When air of a constant temperature and humidity, जो आपका हवा है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी कांस्टेंट. व्हेन एयर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कंटिन्यूअसली पास्ड ओवर ए सॉलिड मटेरियल. जो एक सॉलिड मटेरियल है उसमें क्या है, मॉइस्चर है आपका. सो व्हेन एयर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कंटिन्यूअसली पास्ड ओवर अ वेट सॉलिड अप टू ए सर्टेन पीरियड, देन इक्विलिब्रियम विल बी रिच्ड. इक्विलिब्रियम रिच्ड मतलब क्या, जब आप एक आपके पास एयर है उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसमें पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी है, वो आप कंटिन्यूसली एक मटेरियल के ऊपर पास किए, क्या होगा. सो मटेरियल एंड आपके एयर का जो मॉइस्चर है दैट विल बिकम इक्वल, दैट इज इक्विलिब्रियम. ओके, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम. सो व्हेन कांस्टेंट एयर एंड कांस्टेंट एयर ऑफ when air of constant temperature and humidity is continuously passed over a solid material up to a certain period, after that there is equilibrium, and after equilibrium there will be no alteration in the moisture content of the solid. मान लीजिए कि आपके जो एयर है उसका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, आपका आपका जो सॉलिड है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो आपने इनिशियली पहले पास किया वो एयर सॉलिड से, तो क्या होगा, सॉलिड एब्सॉर्ब करेगा मॉइस्चर, बट इतना भी नहीं करेगा, सब मॉइस्चर थोड़ा एब्सॉर्ब करेगा. सो इट विल एब्सॉर्ब मॉइस्चर अप टू a certain extent, then it will not absorb moisture. That condition is known as equilibrium. Okay, so that when there is a equal amount of moisture in your solid and in your air, that is known as a equilibrium condition. आपके solid में भी जो moisture content है वो that exert a same equilibrium vapor, that exert a same vapor pressure as that of the air. एयर में जितना moisture है उतना ही आपके प्रोडक्ट में moisture है, तो उसको बोलेंगे equilibrium condition. So when air of constant temperature and humidity is continuously passed over the solid material up to a certain period, equilibrium is reached, and after equilibrium there is no alteration in the moisture content of your product, okay, or solid. So preparation of, okay, so your preparation moisture and or your air moisture, so environment moisture and your solid moisture is the same. So moisture content of your preparation or moisture present in the solid and atmosphere are equal, therefore no driving force is there for mass transfer. जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है वहाँ से आपका मास ट्रांसफर. सो व्हेनेवर देयर इज इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर आपके एनवायरनमेंट में जो उसका भी मॉइस्चर सेम है, आपके प्रोडक्ट में भी मॉइस्चर सेम है, तो जाएगा कहाँ पे, वो नहीं जाएगा. ऑब्वियसली आपके सराउंडिंग एयर का मॉइस्चर कम है और आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा है, तो आपका प्रोडक्ट का मॉइस्चर वहाँ से वहाँ जा सकता है. सो देयर इज अ मास ट्रांसफर. सो इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप, at equilibrium relationship there is no mass transfer anymore. Now when air of constant temperature and pressure, air of constant temperature and humidity is continuously passed over a solid material containing moisture more than equilibrium moisture content. पहले केस में क्या था, आपके प्रोडक्ट का मॉइस्चर और आपके एयर का मॉइस्चर, एनवायरनमेंट का मॉइस्चर सेम था. इस केस में क्या है, देखो, when
air of constant temperature and humidity is continuously passed over a solid material containing moisture more than the equilibrium moisture content, the solid will lose water. Solid will lose water. Solid will lose water continuously until equilibrium moisture content is reached, and this is called as a desorption. इसको क्या बोलेंगे? डिसॉप्शन phenomenon. डिसॉप्शन मतलब क्या? आपका जो एयर है उसका मॉइस्चर कम है और आपके प्रोडक्ट का मॉइस्चर ज़्यादा है, तो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट मॉइस्चर छोड़ेगा. इट विल रिलीज द मॉइस्चर और वाटर अप टू सर्टेन एक्सटेंट. कब तक? Until equilibrium moisture content is, this phenomenon is known as a desorption. So when air of constant temperature and humidity is passed continuously with over a solid material containing more moisture than EMC, equilibrium moisture content, then solid will lose the water continuously until equilibrium moisture content is reached. This is called as a desorption. Now third condition, when air of constant temperature and humidity is passed over a solid product having moisture less than that of the equilibrium moisture content. अभी इसमें क्या है? Moisture क्या है? इसमें less है. When air of constant temperature and humidity is passed over the solid material which is having moisture less than that of the equilibrium moisture content, solid will absorb the moisture. अभी इसमें क्या है? आपका एयर का moisture level ज़्यादा है, आपके solid का moisture level कम है, तो आपका solid क्या करेगा? Water absorb करेगा. Solid will absorb the water continuously up to the EMC is established. EMC establish करने का ट्राई करेगा. ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या है? एनवायरमेंट है. एनवायरमेंट का मॉइस्चर कंटेंट है 2%, आपके प्रोडक्ट का मॉइस्चर कंटेंट है 3%. व्हाट विल हैपन व्हेन दिस एयर विद ये तो फिक्स रहेगा 2% एयर का, बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. Air is passed on your product. What will happen? So your product has a more moisture content than EMC, equilibrium moisture content. अगर दोनों का भी सेम है तो उसको बोलेंगे equilibrium moisture content. Now what will happen? आपके प्रोडक्ट का मॉइस्चर ज़्यादा है, so your product will release the moisture. आपको प्रोडक्ट रिलीज करेगा मॉइस्चर कब तक? जब तक दोनों एनवायरमेंट का मॉइस्चर सेम नहीं होगा. इसमें 0.5% रिलीज करेगा, इसमें होगा 2.5%, इसमें भी होगा 2.5%. That is known as equilibrium. Okay? Now suppose आपके प्रोडक्ट का moisture content है 1%, your air has a moisture content of 2%. So you can see what again I could draw करना. Are you getting or not? So your product has a 1% moisture. यहाँ पे 1% moisture product में, and this is air, constant humidity and temperature. यहाँ पे air है 2% है उसका. What will happen? Your material has a 1% moisture, air has a 2% moisture. So material will try to establish a equilibrium with the air. ये equilibrium करने का ट्राई करेगा. तो क्या करेगा फिर? तो एयर में 2% है, इसमें 1% है, तो इससे ये 0.5% ले लेगा. दोनों को क्या होगा? 1.5%. When a product has a less moisture than equilibrium moisture content, it will absorb the moisture. And when product has a more moisture content than equilibrium moisture content, it will lose the moisture content. Okay? So when air with the constant temperature and humidity is continuously passed over a material having moisture content more than the EMC, solid will lose the water continuously until EMC is established. This is known as desorption. When air of constant temperature and humidity is passed over the material containing moisture content less than that of the EMC, the solid will absorb the moisture continuously until EMC is reached. This is known as sorption. जब वाटर रिलीज करता है तो उसको बोलेंगे डिसॉप्शन. जब वाटर एब्सॉर्ब करता है उसको बोलेंगे सॉप्शन. मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इज डन बाय यूजिंग मेजरमेंट ऑफ EMC. Measurement of equilibrium moisture content is done by using desiccators. So material is subjected to a different humidity and humidity conditions until equilibrium is reached or constant weight. There is no change in the weight of initial and final. That is known as a equilibrium moisture content. It is done by using desiccator. Factors affecting on the equilibrium moisture content. First factor होता है nature of material. Material कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है equilibrium moisture content. For example, a non-porous insoluble solid will have 0 EMC. कुछ non-porous material है, insoluble solid है, so it will have 0 EMC.
जीरो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। कौन से मटेरियल होगा? नॉन पोरस इनसोल्युबल मटेरियल, फॉर एग्जांपल टाल्क। टाल्क का इफेक्टिव EMC दैट इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। टाल्क का कितना है? 0। ठीक है। फाइबर्स और कोलाइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस they will have variable equilibrium moisture content or higher equilibrium moisture content. For porous solid, EMC will be higher or variable. Now nature of air with zero humidity. Okay, nature of air. So EMC को affect factors affecting on the EMC. First was this porous solid, okay, or fibers or colloidal substances, और porous solid. Non porous में क्या होता है? Zero होता है। porous में क्या होता है? ज़्यादा होता है moisture का। Then second factor is nothing but the nature of air with zero humidity. Material will have zero EMC. आपके एयर में जीरो ह्यूमिडिटी है, आपके एयर में ह्यूमिडिटी है नहीं, so if your air has a 0% moisture content, so obviously all material will have zero equilibrium moisture content, क्योंकि आपके एयर में क्या है? जीरो मॉइस्चर कंटेंट। तो उसमें जो मटेरियल रखेंगे उस एयर में, आपके एयर में मटेरियल एयर में ही मॉइस्चर नहीं है, तो वो कहाँ से एब्सॉर्ब करेगा या फिर कहाँ से रिलीज करेगा? नेचर ऑफ एयर विद जीरो ह्यूमिडिटी, एट द टाइम all material will have a zero equilibrium moisture content. As air temperature will increase, EMC of solid will decrease. देखो दो टाइप के मटेरियल होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक. First one is known as a hygroscopic material. So what is the hygroscopic material? These material they will absorb the moisture from the non-hygroscopic material. मतलब क्या? These are the material which will not absorb the moisture from the environment. Now hygroscopic material, in the hygroscopic material उनके अंदर भी water of crystallization वगैरह होता है. So in the hygroscopic material water is present in the bound water, in the form of bound water. In the hygroscopic material, water found is bound water. It is present in the either fine capillaries, cell or fiber cell, due to physical interaction. So hygroscopic material they will absorb the moisture from the environment. Hygroscopic material मतलब क्या? ये absorb करेंगे moisture. So that is stored in the fine capillaries, cell, fiber walls, physical interaction. Now hygroscopic material consists of bound water. There is a vapor pressure of solid is less than that of the vapor pressure of pure water. Vapor pressure of solid मतलब vapor pressure of moisture present in the solid is less than that of the pure water. That is the nothing but the bound water. Now non hygroscopic material मतलब क्या? ये absorb नहीं करेगा. Non hygroscopic मतलब this material will not absorb moisture from air. In that water is present in the wide species, so it will have unbound water. जो hygroscopic material है उसमें bound water होता है, जो non hygroscopic material है उसमें unbound water होता है. Vapor pressure of the moisture in the non hygroscopic material और unbound water का definition है. Vapor pressure of moisture present in the solid is equal to that of the vapor pressure of pure water. That is unbound water. Equilibrium क्या होता है? Equilibrium मतलब क्या? तो moisture present in the air, ठीक है, moisture present in the air is which exert a same vapor pressure at that of the moisture present in the material. में जो moisture है वो जितना vapor pressure exert करता है उतना ही vapor pressure air का है, उसको बोलेंगे equilibrium, उसको बोलेंगे equilibrium moisture content. So when vapor pressure of moisture present in the air is equal to vapor pressure of moisture present in the sample, it is known as a EMC, equilibrium moisture content. Desorption and absorption phenomenon क्या होता है? ठीक है. So when a solid will have a more moisture content than air, what will happen? It will release the water. Okay. So when continuously air of a constant temperature and humidity is passed over the material, and if material has a more moisture content than equilibrium moisture content, so it will release the water, known as a desorption. Now air of constant temperature and humidity is passed over a material having moisture content less than that of the equilibrium moisture content. What will happen? It will absorb the water, known as absorption. The two phenomena I have told you in the last slide.
The relationship between temperature and humidity of a relationship between temperature and humidity, it is known as a psychometric chart. Psychometric charts will give you relationship between humidity, temperature and moisture, right? इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, वी हैव सीन। क्वेश्चन आ चुका है साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर जीपैट 21 में। Actual temperature measured by ordinary manometer is known as a dry bulb temperature. Actually temperature measured by ordinary manometer is known as a dry bulb temperature. Now measurement of equilibrium moisture content is done by using desiccator. ये मैंने आपको बोला है। Free moisture content क्या होता है? So free moisture content is the amount of water which is free to evaporate from solid. So suppose your solid has some moisture content. Free moisture content is nothing but the amount of water that is free to evaporate from the solid. It is not a bound water. That is only the free moisture. Now total, okay, moisture content of material is equal to total water content of the material minus equilibrium moisture content. Formula है moisture content of material is equal to total water present in the compound minus equilibrium moisture content. Now LOD क्या होता है? LOD means loss on drying. So loss on drying. तो आपने क्या किया? आपको LOD निकालना पड़ता है. So you have to take 1 gram of powder. You have to subject that powder into hot air oven at 90 degrees Celsius for 20. After that you have to again reweigh the powder. Loss in the weight loss. Okay. So weight loss means amount of moisture. So amount of moisture divided by total mass of your sample into 100. This is LOD. तो लॉस ऑन ड्राइंग कैसे करते हैं? लॉस ऑन ड्राइंग तो फॉर्मूला देखो, परसेंटेज लॉस ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इन द सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ वेट सैंपल इनटू 100। ठीक है, तो आपको करना कैसे है? मान लीजिए 1 ग्राम पाउडर ले लिया आपने पेट्री प्लेट में। ठीक है, 1 ग्राम आपने पाउडर ले लिया जो भी वेट करके 1 ग्राम, तो उसको क्या किया? हॉट एयर ओवन में 90 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए रखा। आपने 1 ग्राम पाउडर लिया था, 1 ग्राम, तो एक 15 मिनट के बाद में आपने फिर से निकाला वो वाटर ओवन में से और उसका वेट किया, उसका आ गया 0.9 ग्राम। सो इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट, दैट विल गिव यू परसेंटेज लॉस ऑन ड्राइंग। इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट। सो इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट मतलब क्या है? दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ वाटर इन द सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल weight mass of sample into 100. Percentage loss on drying, that is a loss on drying. Loss on drying, तो ड्राइंग के बाद में कितना लॉस हुआ, कितना वेट लॉस हुआ? ड्राइंग के बाद में वेट किसका, कौन गया बाहर? वाटर गया। सो लॉस ऑन ड्राइंग इज वाटर। परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई सैंपल इनटू 100। कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट है उसमें? मास ऑफ वेट सैंपल और मास ऑफ वाटर इन द सैंपल mass of dry sample, mass मतलब weight of water in the sample divided by weight of dry sample into 100, that is a percentage moisture content. Drying rate मतलब क्या है? Weight of water in a sample divided by time into weight of dry solid. Drying rate, the rate at which there is drying, so it is calculated by using this formula. Weight of water in the sample divided by time into weight of dry sample, that will give you drying rate. Moisture content is calculated by, or it is calculated on the dry basis. Weight of wet sample divided by weight of dry sample into drying curve. This is known as drying curve. So the drying curve, I will explain this drying curve with the, as you can see over here. So drying curve, so it is nothing but the plot of, it is the graph plotted by taking FMC on x-axis and drying rate on y-axis. The curve obtained is known as a drying rate curve. It represents different changes during the drying of material. तो जब ड्राई करते हैं मटेरियल तो ड्राइंग रेट curve. Okay? So if you plot a drying rate on y-axis and moisture content on, so you are going to get a different points. So this A point, what is A to B? AB portion, what is A and B portion? This portion, AB portion, what is that? So okay,
The AB represent initial adjustment time. AB represent initial. Are you able to see this? दिसता है आपल्याला? आपको दिख रहा है क्या? Yes, anybody? Are you able to see this? So this AB is nothing but the, what is AB? It is known as the initial adjustment time, initial adjustment period. During this period, a solid will absorb heat. Temperature okay is solid will absorb heat and temperature will increase. Temperature of solid will increase. At the same time, moisture will become to evaporate. जब आप टेम्परेचर देंगे उसको तो एक थोड़ा सा टाइम लेता है. टाइम करस्पॉन्डिंग टू कर्व ए बी. सो उस टाइम में क्या होगा? दैट इज इनिशियल एडजस्टमेंट. सो दैट सॉलिड विल टेक temperature of that solid will be increased and at the same time moisture will begin to evaporate. Moisture वहाँ से evaporate होने चलेगा and thus tends to cool and drying solid. Cool the drying solid. After some time temperature subsides मतलब decreases. Heating and cooling rate becomes equal. After some time जब heating होता है and cooling rate become equal. Cooling rate बोलेंगे आप, cooling कहाँ से आ गया? तो आप जब हीट कर रहे हो उसको तो उसमें के जो मॉइस्चर वो इवेपोरेट हो रहा है. सो दैट इज कूलिंग. सो इनिशियली it will take heat. The sample will be, the temperature of sample will be increased and by taking that heat it will evaporate the moisture present in the sample. That also tends to cool the sample. Okay. Now after sometimes the drying rate and cooling rate becomes equal and this is known as a wet bulb temperature. This temperature is known as a wet bulb temperature. This temperature is known as a wet bulb temperature. This wet bulb temperature, it is represented by B for bulb. It is known as a wet bulb temperature. Definitions पे focus है. So initial adjustment period जो होता है, temperature क्या होता है मटेरियल का, जब आप हीट करोगे तो मटेरियल will absorb the heat, temperature will increase. ठीक है, क्योंकि हॉट एयर आ रहा है ना ऊपर से, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा. बाद में क्या होगा? दैट टेम्परेचर इज यूटिलाइज्ड फॉर रिमूवल ऑफ, सो देयर इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर. Then temperature will again, temperature of this material will decrease and at equilibrium the rate of heating is equal to rate of cooling and that is known as a wet bulb temperature. Okay, now we will see the next point. Next point is nothing but the curve number B and C. यहाँ पे curve number B and C है. Curve number B and C. पहले अपन ने curve A and B देखा. That is known as the initial. Second is known as the constant rate period. Second curve is known as the constant rate period. So what is the description for second? So this region corresponding to BC, region corresponding to B and C represent the constant rate period. The temperature remains constant and the rate of drying is also constant. यहाँ पे temperature भी constant रहेगा, rate of drying is constant. The moisture evaporating from the surface is replaced by a water diffusing from the interior of the solid. तो जब आप हीट करते हो ऊपर से स्टीम से तो सरफेस का वाटर तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर इज कांस्टेंट. अभी क्या हो रहा है कि जो नीचे जो मटेरियल है बल्क ऑफ सॉलिड में वहाँ पे जो वाटर है वो डिफ्यूज हो रहा है. सो टाइम दिस टाइमलाइन BC रिप्रेजेंट द कांस्टेंट rate period. The temperature remains constant and rate of drying is also constant. The moisture evaporating from the surface is replaced by water diffusing from the interior of solid. The rate of diffusion is equal to rate of evaporation. The moisture content at the end of constant rate, point C, is known as a critical moisture content. Moisture at this point. Moisture at this point, C point, known as a critical moisture content. The critical moisture content. Now we'll see the next. Next curve क्या होता है? Next curve is nothing but the C and D. Next curve is nothing but the C and D. See the next curve. Next curve is nothing but the C and D. What is this? The time corresponding to C and D represent the first falling rate period or unsaturation surface drying. During this period क्या होता है? Surface water is no longer replaced by at the same rate or enough rate or rate fast enough to maintain the continuous filling on the surface. Dry spot begin to appear and the rate of drying will begin to fall. The point D is known as a second critical point. यहाँ पे क्या होता है देखो. So ये जो curve C and D, so at that time what happens? So there is a
heat is there, okay, but moisture in the sample is decreased, okay. So heat is on the surface material, and in the bulk of material is not able to provide the diffusion of water और at the equal rate. So what is happening, सरफेस के ऊपर जो सॉलिड है उसके ऊपर ड्राई स्पॉट आ रहा है, क्योंकि उसके नीचे जो सॉलिड है वो अभी उसमें भी मॉइस्चर नहीं, तो वो मॉइस्चर रिप्लेस नहीं कर रहा, दैट इज अ डिक्रीज्ड मॉइस्चर रिप्लेसमेंट, ओके. ड्यू टू दैट देयर इज अ ड्राई स्पॉट and point at point this, okay. This is known as second critical point. So first phase था initial addition period, second period is known as the constant rate period, अभी जो थर्ड रहेगा उसको बोलते हैं फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड, एंड फोर्थ आएगा सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड. सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड ये वाला कर्व डी एंड क्या है, थोड़ा सा टाइम ये एडिशनल है, सब कुछ लास्ट स्टेज में ये लिया नहीं था. नाउ व्हाट इज डी, beyond the e drying rate is equal to 0, therefore temperature and moisture content remain constant, therefore E continued as a drying waste of the time and energy. Beyond the E point there is no drying because वहाँ पे moisture है ही नहीं, तो क्या drying, so that is known as the equilibrium moisture content. At this point आपका जो एयर स्टीम है उसका टेम्परेचर, जहाँ पे एयर आता है ना हॉट एयर, उसका टेम्परेचर, उसमें जो मॉइस्चर है, सो सेम मॉइस्चर आपके मटेरियल में रहेगा, सो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. So beyond this E point there will be no drying. Okay? There will be no drying. This is known as the theory for drying. एक important है आपको explain किया है. See the okay. curve मैंने explain किया है. Now ये part बहुत ही ज़्यादा important है. This part is very important. So whatever slide is very important. इसके ऊपर क्वेश्चन आया GPAT 2023. So first, what do you mean by hygroscopic material? So material or substance which absorb the moisture from your environment but do not dissolve or liquefy. Okay, so there are certain substances, वहाँ पे आपने कुछ मटेरियल देखा होगा, वो क्या करते हैं मॉइस्चर में से एब्सॉर्ब कर लेते हैं, एयर में से मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेंगे. So these are the substances or material that can absorb the moisture from, but they will not get dissolved or they will not get liquefied. They are known as a hygroscopic material. So sugars and iodine. Sugar and iodine is nothing but a hygroscopic material. शुगर में क्या है कि शुगर क्या करता है, वाटर और मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है. आपने देखा होगा शक्कर, अगर आपने बारिश के दिनों में अगर शक्कर है, शक्कर क्या होता है, गोला बन जाता है. तो शुगर विल एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड देयर इज अ एग्लोमरेशन. आयोडीन विल एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड देयर इज एग्लोमरेशन. तो शुगर अगर धूप बारिश के दिनों में आपने खुली रख दी है तो वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उस टाइम पे बारिश के दिनों में एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है. सो देयर इज अ हाई ह्यूमिडिटी. शुगर विल एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड विल बिकम एग्लोमरेटेड, दैट इज हाइड्रोस्कोपिक. ये लिक्विड नहीं बनेगा. लेकिन व्हाट इज मीन बाय डेलिक्वेसेंट मटेरियल? सो सब्सटेंस और मटेरियल. डेलिक्वेसेंट मटेरियल मीन्स सब्सटेंस और मटेरियल which can absorb a sufficient water from the air or from the environment to become a liquid. So substance or material that can absorb a moisture from environment up to that extent that it will get liquefied. Okay, conversion of solid material into liquid will be there by absorption of water. An example of deliquescent material: sodium hydroxide, calcium, copper, zinc chloride, sodium valproate. Okay, sodium valproate is a anti-epileptic drug. It is a highly deliquescent drug. इसके ऊपर GPAT 2021 में क्वेश्चन आया deliquescent. आयन एक्सचेंज रेजिन कैन प्रिवेंट दिस डेलिक्वेसेंसी. ठीक है, हाइग्रोस्कोपी मतलब क्या, ऐसे मटेरियल जो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करते हैं लेकिन इतना नहीं करते कि वो लिक्विड हो जाए. डेलिक्वेसेंट मटेरियल मतलब क्या, ये मटेरियल एयर में से या हवा में से मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेंगे और इतना मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेंगे कि पूरा लिक्विड बन जाएंगे. एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम वेल्प्रेट. अभी देखो, अगर बारिश के दिनों में अगर आपको जो नमक का डिब्बा है वो अगर ओपन रख दिया बारिश के दिनों में, क्या ओपन रख दिया, नमक का डब्बा, वो क्या होता है, पूरा पानी बन जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, दे आर नोन एज अ डेलिक्वेसेंट मटेरियल. सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम वेल्प्रेट. So they absorb a sufficient moisture from the air and will become a liquid. Hygroscopic material, they will absorb the moisture from the air, but they will not become liquid. Okay. Now there is another term known as deliquescents. Sorry,
there is another term known as efflorescence. This was question in GPAT 2023. अभी जो परसों एग्जाम हुआ है उसमें डेलिक्वेशन डेफिनेशन. So efflorescence material means what? So those material which release the water of crystallization. Some material crystal release or liberate water of crystallization wholly or partly upon exposure to humid conditions or during trituration. They get liquefied. Example क्या है? Citric acid, caffeine, ferrous sulfate, sodium carbonate, washing soda. तो कुछ मटेरियल होते हैं कि जो वाटर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. देखो hygroscopic material, they will absorb the water and there is an increase in the weight of that sugar, iodine. Okay, deliquescent material will absorb the moisture and will become liquid. ये क्या होंगे? लिक्विड बन जाएंगे. इतना absorb करेंगे पूरा लिक्विड बन जाएंगे. सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, कॉपर, एक्सेट्रा. इफ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होते हैं? दे विल रिलीज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये absorb नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? वाटर रिलीज करेंगे. एग्जांपल क्या है? फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैफीन एंड साइट्रिक एसिड. तो इसके ऊपर जीपैट 2023 में क्वेश्चन आया फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ. दिस इज नोन एज इफ्लोरेसेंट. Desiccants means these are the agents which are used to prevent the hygroscopic drug, which are used to protect the hygroscopic drug. Desiccant मतलब क्या? Desiccant मतलब ऐसा मटेरियल है कि जो hygroscopic मटेरियल के साथ में उसको रखते हैं ताकि desiccant मटेरियल सब मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर ले, hygroscopic मटेरियल का कुछ प्रॉब्लम ना हो. So agent which protect the hygroscopic drug acts by absorbing the water from surrounding and prevent the hygroscopic drug to absorb the water. एग्जाम्पल क्या है उसका? डेसिकेट का सिलिका जेल. आपने देखा होगा सिलिका जेल कैप्सूल का. अगर कोई बॉटल आता है ना, कैप्सूल का बॉटल, तो उसमें एक छोटा सा पाउच होता है. वो पाउच होता है सिलिका जेल. दैट इज यूज्ड एज डेसिकेंट. डेसिकेंट मींस मटेरियल व्हिच प्रिवेंट द or which protect the hygroscopic material from the absorbing the moisture from environment. They themselves absorb the moisture from environment. That's how they protect the hygroscopic material. ठीक है. आपने कोई कैप्सूल का बॉटल देखा होगा, कैप्सूल जिसमें जैसे एक आता है विटामिन का कैप्सूल आता है बीकाट एग्जामाइन. तो बीकाट एग्जामाइन में कुछ 50 कैप्सूल का बॉटल आता है, तो उसमें आपको एक सिलिका जेल का पाउच मिलेगा. दैट इज अ डेसिकेंट. सो hygroscopic material absorb the moisture. Okay, will increase in the weight. Iodine and sugar. Okay. Deliquescent material will absorb the moisture to become a liquid. Example क्या है आप लोग को? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, कॉपर, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम वेलप्रेट. They are hygroscopic. But they are deliquescent. They will become a liquid. ये absorb करेंगे, लिक्विड बन जाएंगे. इफ्लोरेसेंट मटेरियल मतलब क्या? ये absorb नहीं करते, ये क्या करते हैं? उल्टा रिलीज करते हैं. So efflorescence material, they will release the water of crystallization wholly or partly upon exposure to humid condition or environment. Example is caffeine, citric acid, ferrous sulfate, sodium carbonate. This was question in GPAT 2020. इसके ऊपर भी डेलिक्वेसेंस के ऊपर क्वेश्चन है, हाइड्रोस्कोपी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. डेसिकेट्स क्या होते हैं वो मालूम होना चाहिए आपको. नाउ ये जो स्लाइड है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है GPAT 2021. So as per the European Pharmaceutical Technical Guide, European Pharmacopoeial Technical Guide classified 3 types of hygroscopicity based upon the static method when compound is stored at a 24 degrees Celsius for 24 hours at a 80% relative humidity. तो यूरोपियन टेक्निकल गाइड जो है उसने क्या किया? उसने डिफाइन किया हाइग्रोस्कोपिसिटी. मतलब आप तो ऐसे हवा में बात कर रहे हो कि हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या? ये मटेरियल दैट एब्सॉर्ब द मॉइस्चर एंड इंक्रीज इन द वेट इज देयर. लेकिन कितना मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा, कितना वेट इंक्रीज होगा, कुछ तो मालूम नहीं. डेलिक्वेसेंस मतलब क्या? तो वो तो मालूम है कि एब्सॉर्ब होगा वाटर और लिक्विड बन जाएगा. लेकिन हाइग्रोस्कोपिक मतलब अगर आपको बोलना है कि मटेरियल इज वेरी हाइग्रोस्कोपिक और स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक और हाइग्रोस्कोपिक, तो आप कैसे डिफाइन करो? सो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यूरोपियन फार्माकोपियन टेक्निकल गाइड, they have classified 3 types of hygroscopicity based upon the static method. Okay, when compound is stored at a 24 degrees Celsius for 24 hours at a 80% relative humidity. 1 ग्राम पाउडर लेना है आपको, 24 आवर्स तक रखना है. किसमें? 24 डिग्री सेल्सियस में और 80% relative humidity. जो स्टेबिलिटी चेंबर्स होते हैं उसमें रखना है. तो 24 डिग्री सेल्सियस एट a 24 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स एट a 80% relative humidity. आपको क्या करना है? इंक्रीज इन द वेट.
So you have to take a 1 gram of powder, say for example 1 gram of powder, and you have to keep that 1 gram of powder at 24 degrees Celsius for 24 hours at 80% relative humidity, and you have to measure increase in the weight. You have to measure increase in the weight. Now, if increase in the weight of that material is more than 0.2%, if it is more than 0.2% weight by weight, less than 2%, it is known as a slightly hygroscopic. It is known as a slightly hygroscopic. Okay. Now, if that increase in the weight is more than 0.2%, is more than 0.2% weight by weight, less than 15% weight by weight, that is known as a hygroscopic. If that increase in the weight more than 15% weight by weight, that is known as a very hygroscopic. इसके ऊपर GPAT 2020 में क्वेश्चन आ चुका। यूरोपियन टेक्निकल गाइड्स ऑन हाइग्रोस्कोपिसिटी बेस्ड अपॉन स्टैटिक मेथड। आपको एक 1 ग्राम पाउडर लेना है, उसको स्टोर करना है कहाँ पे, 24 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स एट 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 24 आवर्स के बाद में उसका वेट चेक करना है, इंक्रीज हुआ है कि नहीं। अगर वेट इंक्रीज हुआ है, वेट इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है, 0.2% वेट बाय वेट से ज़्यादा है, 2% से कम है। So increase in the weight after 24 hours of that powder is more than 0.2% weight by weight, but less than 2% weight by weight. So it is known as a slightly hygroscopic. So if increase in weight of that powder is more than 0.2% weight by weight, but less than 15% weight by weight, it is known as a, if increase in the weight of that material is more than 15%, it is known as a very hygroscopic. एक दूसरा ट्रिक बोलता हूँ, इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। ये 0.2% छोड़ दो। So just क्या करना है आपको, 1 gram, you have to keep 1 gram of powder at this condition, 24 degrees Celsius for 24 hours at 80% relative humidity, and you have to measure increase in the weight. So if increase in the weight is less than 2%, if increase in the weight of that powder is less than 2%, that is known as a slightly hygroscopic. If increase in the weight of that material is less than 2% weight by weight, it is known as slightly hygroscopic. क्या बोलेगा, slightly hygroscopic. Now, if increase in the weight of that powder is less than 15%, known as a hygroscopic. If increase in the weight of that powder is more than 15%, that is known as a very hygroscopic. ये GPAT 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, you have to remember this. ठीक है, कोई बोलेगा नहीं आपको ये slightly hygroscopic मतलब increase in the weight less than 2%, hygroscopic मतलब increase in the weight less than 15%, very hygroscopic मतलब increase in the weight more than, ठीक है। मेथड क्या है, मेथड यूरोपियन टेक्निकल गाइड। यू हैव टू प्री-weigh the powder, you have to keep 24 hours at a 24 degrees Celsius 80% relative humidity. Now, okay, now deliquescence. What do you mean by deliquescence? So deliquescence is nothing but the absorption of sufficient water from air or environment to become a solution, known as a deliquescent material. Now we'll